Hello everyone, welcome to SUNYA IAS, and this is your what to read and how to read video for Prelims revision program. And in this video, we are going to cover what to read and how to read for economic test number 6. Starting with the syllabus, so we have inflation and business cycle. Then we'll be moving on to the sectors of economy, that is manufacturing sector and the service sector. Because agriculture sector, we have separate tests for agriculture, seeing the weightage of agriculture in the past years. So we have 3 to 4 separate tests on agriculture. That's why agriculture sector is not covered here. Alright, so let's see what we have to read in inflation. Inflation में सबसे पहले तो do the difference between inflation and deflation. Then move on to the ways which are there with respect to RBI as well as from the government side to tackle inflation as well as deflation. ठीक है जी. Then move on, what are the types of inflation? उसमें do demand pull inflation, cost push inflation, profit push, built-in inflation, monetary inflation, repressed, stagflation, skewflation, headline inflation, what is core inflation, what is structural inflation, what is reflation, what is and then these are the inflations which are based on the types of speed of inflation. All right, that inflation कितनी speed से बढ़ रहा है. If it is like इसमें we have the categorizations like creeping inflation, walking, trotting or running inflation, then galloping or hyperinflation. All right, then move on and see the difference. What is difference between inflationary gap and deflationary gap? Then एक another इसके साथ ही associated concept है, that is inflationary spiral and deflationary spiral. Then move on to the concept of base effect and how the different governments use the base effect to show the different levels of inflation in the country, how they can maneuver the levels of inflation according to whatever they want with the help of this base effect. All right, then what are the effects of inflation? Mark this as the most important aspect with respect to UPSC. UPSC's favorite area is the application part, right? So what are the effects of inflation and deflation? Do it on borrowers or lenders. Inflation होने का borrowers पे क्या effect होगा and lenders का क्या effect होगा, किसके लिए positive है किसके लिए negative है. Then move on to businessmen versus the fixed income group people. उसमें salaried persons हो गए, pensioners हो गए, तो इनके ऊपर देख लेना inflation से क्या होगा. Then move on to what is the effect on depositors, bond holders, and then ultimately move on to what will be the impact of inflation on currency exchange rate. And then if it is impacting the currency's exchange rate, it will obviously have impact on importers and exporters. तो inflation का indirectly impact क्या होता है importers and exporters के ऊपर, वो भी दोनों का difference देख लीजिएगा. Then there are few indices which are used in the concept of inflation. There's a last Paris index, Past index and Fisher index. इन तीनों को देख लीजिएगा. Then in India we have these indexes. That is CPI rural, urban and all India. तीनों को देख लेना. Then consumer food price index, then CPI industrial workers, CPI rural laborers and agricultural labor, wage rate index, wholesale price index, headline CPI versus core CPI, and then refined core inflation. इन तीनों में क्या difference है, ठीक है जी. And इसमें whenever you are doing these indices which are with respect to India, just see four things. Number one is the trend कि last 3-4 साल में zigzag pattern चल रहा है. Is this continuously declining or it is continuously rising? ठीक है, एक ये चीज़ देखनी है. Then इन सबको कैलकुलेट करने के लिए what is the base year used by the government? Third thing, you have to see the name of the organization which gives these indices. And fourth, you have to see what are the components of the indices. और components में top के जो तीन या चार होंगे उनका ascending descending order कर लेना. ठीक है, that's it. चलो. Then a few interlinkages with respect to inflation. We have to do that inflation targeting. जो RBI का हमने monetary policy you must have read in your second test, right? Monetary policy वाले में that RBI uses inflation targeting now. So what is the concept of inflation? Which type of inflation index RBI uses for it? उसको देख लीजिएगा. Then what is the rate of inflation? What impact does it has in urban areas? What impact does it have in rural areas? कहाँ पे ज़्यादा impact होगा? कौन सी चीज़ कहाँ पे impact होगी? तो ये चीज़ देख लेना because it becomes potential area of application in prelims. Then miscellaneous indices are there. इसका just नाम associate करना. जैसे for example, I have written over here to banking business service price index. That is related to inflation and is launched by RBI. Just inflation expectations over for households by RBI. Then there are a few others. Producers price index, business inflation expectations survey, Residex by NHB. National Housing Board, Experimental Service Price Index, Annual Survey of Industries, and Index of Service Production. इसमें you have to just see two things, the name of the organization plus the second thing which you have to see is कि ये वो data क्या है index में. nothing else. No need to remember data, उसकी nuances में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. Just remember the name of the organization and the what the purpose does the index solve. Then I have mentioned here agriculture. ठीक है जी, तो इसमें नो नीड टू रीड दिस फॉर नाउ बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए वी हैव सेपरेट टेस्ट. तो ये एग्रीकल्चर वाला इन्फ्लेशन जैसे फूड इन्फ्लेशन, एडिबल ऑयल इन्फ्लेशन, देन वी हैव अनियन और टोमेटो. उसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ब्रॉड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है ना. एंड इवन इन कोविड गवर्नमेंट हैड वेरियस मेजर्स टू टेकल द फूड इन्फ्लेशन. तो दोज ऑल आर नॉट टू बी कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस टेस्ट. दैट विल कवर इन द नेक्स्ट टेस्ट और इन द एग्रीकल्चर सेक्शन.
Then there were few other related news with respect to this. That is Thalinomics, impact of American inflation on India. Then index of industrial production. This is very important. इसमें भी two things. One, weight assigned in two different types of goods. This index has assigned different weight to different types of goods. जैसे for an example, what are primary goods, what are consumer goods, what are non-durable consumer goods, है ना, and what are intermediate goods, etc. etc. तो उनकी weightage एक देख लेना. Then sector based weightage. Sector based weightage add in कि primary sector को कितना allocated है, secondary को कितना है, tertiary को कितना है. Then comes this IIP का एक part है index of 8 core industries. So 8 core industries का अलग से एक index निकाला जाता है, which is the part of IIP only. तो उसमें देख लेना जो 8 core industries है उनका ascending या descending order में contribution कितना है. Number 1 कौन सी industry contribute कर रहा है, index of industrial production etc. index of 8 core industries में. All right. Then let's move on to the industrial sector. No need to go into the details of just remember a minute difference. What is difference between liberalization, privatization and globalization. ठीक है, एक ऐसा क्रक्स कर लीजिएगा और स्टार्ट्स कर लीजिएगा विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ठीक है, वो एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगे, उतना ही बहुत है, ज़्यादा डिटेल्स में मत जाना. Then what is the concept of fourth industrial revolution? New industrial policy क्या है which government has brought, and what is the scheme called as समर्थ उद्योग भारत 4.0. ये तीनों देख लीजिएगा. Then what is the concept of circular economy? ठीक है, इसके साथ ही एक और देख लेना, what is the gig economy. ठीक है जी. एंड थर्ड टर्म इज नेटवर्क प्रोडक्ट्स. व्हाट आर नेटवर्क प्रोडक्ट्स? तो ये कीवर्ड्स को जस्ट एक डेफिनेशन से पढ़ लेना, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट यूपीएससी प्रीलिम्स में सिर्फ यही पूछेगा व्हाट इज गिग इकोनॉमी. 4 चीज़ें दे देगा, नीचे लाइंस दे देगा, यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन. नेटवर्क प्रोडक्ट्स से 4 ऑप्शन दे देगा, यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन. तो उस एस्पेक्ट से पढ़िएगा. देन इफ यू मूव ऑन फर्दर, वी हैव टू डू द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2011, फॉलोड बाय व्हाट इज मेक इन इंडिया, फॉलोड बाय व्हाट इज असेंबल इन इंडिया, एंड अल्टीमेटली द PLI स्कीम जो अभी 2021-2022 में 13 सेक्टर्स के लिए लॉन्च करेगी. ये वो देख लीजिएगा. PLI स्कीम को 3-4 इसके बेसिक फीचर्स हैं. वैसे तो बहुत सेक्टर्स के लिए है, लेकिन 13 सेक्टर्स के लिए अभी लॉन्च करेगी, तो उन 13 सेक्टर्स को देख लेना. पर PLI स्कीम होती क्या है उसके 2-3 पॉइंट्स देख लीजिएगा. दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इट. तो वैसे इट इज़ अ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ठीक है, तो जितना कोई भी इंडस्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी उस हिसाब के, उस बेसिस के ऊपर, उसकी प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर उसको इंसेंटिव्स देगी गवर्नमेंट. तो एक तो चीज़ें और देख लेना इसके बारे में. देन व्हाट इज नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स 2019. देन देयर इज इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट फंड. व्हाट इज दैट फंड, क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा. देन देयर इज डेवलपमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर चिप्स. इसको PLI के साथ कंपेयर कर लेना, कंपैरेटिव एनालिसिस में पढ़ना. देन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टअप्स. What are the categories of startups, what are unicorns, etc., and what is the mechanism that is available with us in India for the exit of these startups, which is also called as exit of sick industries. Then see the ease of doing business index, very important, market double star. Then what are the judicial mechanisms we have to pace up the industrial sector problems, or to pace up or to have quick solutions with respect to the problems in industrial sector. We have the enforcing contracts portal, we have international arbitration center which is made at Gift City. Then labor reforms में we have 3 labor codes. All the previous acts have been merged and 3 labor codes have been involved by the government back in the year 2020-2021. तो उनमें देख लीजिएगा. And then finally, this is very important, what is PM Gati Shakti plan as a part of Atmanirbhar Bharat. And then finally, what is national monetization pipeline. If we talk about specifically ease of doing business index, so these are the 5-6 acts which are to be done with respect to the government efforts in this ease of doing business section. Number 1, Factories Amendment Bill 2014, Industrial Disputes Act 1947 and 2010, E-Shram Portal 2021, Model Shops and Establishments Bill 2016, and RERA Act. ठीक है जी, Real Estate Regulation and Development. Then let's move on to the next, that is MSME Industries. एक तो इनका डेफिनेशन देख लेना. देन देख लीजिएगा व्हाट आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम MSME इंडस्ट्री. इनका रिसेंटली एक रिविजन हुआ है. ठीक है, इनके क्राइटेरिया का, उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लेना, एक ऐसे टेबल ड्रॉ करके डू रिवाइज. Then if we talk about MSME and textile sector, वैसे तो बहुत सारी schemes and there is a plethora of schemes, but these are important with respect to this year. Number 1, PM Mega Investment Textile Parks, that is PM Mitra scheme. Then it is ROSCTL scheme. ये भी बहुत important है, बहुत जैसे ROTTEP scheme हमारे पहले थी ना, तो वैसे ही BOP में जैसे we will do ROTTEP scheme, तो similarly there is this ROSCTL scheme. Then we have the GEM portal, then we have ODOP, One District One Product 2021 scheme. Then we have Mudra loans under Atmanirbhar Bharat. Then we have Swalambham challenge. Then we have Ubharte Sitare program. Then MSME's ministry's own scheme is there. There is Gram Udyog Vikas Yojana. Then we have Spurti scheme. फिर एक RAM scheme है, वर्ल्ड बैंक का मार्केट डबल स्टार, ये भी कर लीजिएगा. And then ultimately in 2022 budget we have the CGT MSc scheme. All right, so these are the schemes which have to be done with respect to MSME and textile sector.
देन फाइनली मूविंग ऑन टू द सर्विस सेक्टर, इसमें एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के स्टार्ट्स कर लीजिएगा. इंडिया के इम्पोर्टिंग स्टार्ट्स क्या हैं, जिगजैग ट्रेंड रहा है, राइजिंग रहा है, डिक्रीजिंग रहा है. एंड सिमिलरली यू हैव टू डू विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. फिर इनको कंपेयर कर लेना, इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं. एंड देन ऑल्सो कंपेयर इट विद इंटरनेशनल लेवल्स के इंटरनेशनली सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किसके. वैसे वील कवर इट इन BOP वाला टेस्ट, दैट इज़ आई थिंक नेक्स्ट टेस्ट और वन आफ्टर द नेक्स्ट टेस्ट. ठीक है जी, तो उसमें हम कवर करेंगे, पर इसमें भी देख लेना एक बार. देन व्हाट आर OSP गाइडलाइंस, ठीक है, अदर सर्विस प्रोवाइडर गाइडलाइंस बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन. देन विद रिस्पेक्ट टू बजट 22 व्हाट आर द सनराइज सेक्टर विच इट हैज़ डिक्लेयर्ड. ठीक है, तो उसने कौन कौन से करे वो भी देख लीजिए. फार्मास्यूटिकल इज वन ऑफ देम, तो ऐसे देख लीजिएगा. देन व्हाट इज ई कॉमर्स, उसमें इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल क्या होता है, मार्केट प्लेस बेस्ड मॉडल क्या होता है. देन व्हाट इज ई कॉमर्स रूल्स 2019 एंड ड्राफ्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020, दोनों को देख लेना और कंपैरेटिव एनालिसिस देख लेना. देन व्हाट इज ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बाय DPIIT. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ONDC ऑफ DPIIT, ये भी चीज़ें देख लीजिएगा. ऑलराइट, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर इकोनॉमी टेस्ट नंबर 6. I hope you all are performing very well in your tests, and I seriously wish you all the very best for your next tests as well. Keep working hard, prepare well. Thank you so much.